Hello, good afternoon, guys. A very happy new year. So, first day of 2024. So, everyone trying to do something new. So, I also wanted to start my first live video on 1st January 2024. So, yeah, I am little anxious, little excited. Live is something which can boost your morale, at the same time can also make you feel very conscious. But the first day of the year, I would like to talk about uh, health tips, or maybe a kind of give you a knowledge of how the life has changed over years. And I would like to discuss what all should be the things to be kept in mind from a growing kid to the older adults. So that is my motto for today, that I would be talking about what are the things required to do for we'll start from kids. I have made some pointers so that I try to cover most of the things, because as it's my first live, so I don't want to miss on anything. This first we talk about is young kids. Young kids are like the kids who have just started eating food. They are on a weaning diet or a complementary diet. So first of all, parents and the family members are the role model. Like, if you kids will definitely follow and eat what the entire family or the parents are eating, because they watch us through in and out. So you cannot hide anything from them. If you are eating something healthy, so they will reciprocate, they will replicate. If you are eating unhealthy, they will do that as well. So you have to be very conscious of what you are eating, because every time there is someone at your home who is watching you. So make sure that you are eating wise, so that your little one also follows you, because the life has changed. Like, the times of the kind of childhood what we had, our kids are not having the same kind of childhood in terms of quality of food, or the kind of games, outdoor games we used to play. Activity levels are drastically different. Like, we used to be active, I would say, like, um intensely active, I would say, in playing, maybe, like, not less than 4 hours in a day, whereas kids nowadays do not get that much time to play, because of the competitive schooling methods, or doing extracurricular classes and things like that. So there is a vast difference in that. Also, kids are being influenced towards advertisement of packaged foods at a very young age, due to advertisements or social media, anything. So there is a lot of exposure to that. So that has to be taken in mind, that if you have a young kid at your place, make sure that there is limited consumption of packet food or exposure to that because they can relate. Like, if there is something in the on the TV and it is available at home, so they know that whatever is seen can be at home. So make a very clear decision of what packet food you are getting at home, because once the kids are in growing age, okay, exposure to junk food is like, it increases because of uh, school. Like, they have friends around them, school में जाते हैं, they try to copy their friends. अगर friends Maggie लाए हैं, so they also want to eat Maggie in their tiffin. So that is the time where your hold becomes little less, because then they feel left out. Okay, so this happens with my daughter. I try to give her healthy food, जितना हो सके उतना हेल्दी देने की ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर स्कूल में शेयरिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज दूसरे बच्चों को हेल्दी फूड हमेशा नहीं खाना होता है, सो दे डोंट शेयर. सो देन द जंक फूड इनटेक gradually increases as the kids grow up a little. So still you have to make them understand that junk food or any packet food is very high in salt, sugar, fats, which could definitely has to be restricted. Only once a week should be the rule, taught to them at a very early age, so that they can follow. And of course the same rule applies to the parents as well. Okay, and when we talk,
So when we talk about young adults, they get attracted towards trending lifestyle, entering into alcohol and smoking. So वो एक चीज़ है जो हमको बच्चों को बताना है कि nowadays parents are cool, they themselves want to introduce alcohol. वो खुद बच्चों को initiate करते हैं कि हाँ भाई चलो हमारे साथ बैठ कर पियो, so that the kids don't hide anything from them. But then I feel there are recent research which says occasional alcohol and smoking is also injurious to health, because there are too many things which are causing toxicity. इतनी सारी चीज़ें हैं जो toxicity हमारे बॉडी में ऐड करती है. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, योर exposure to UV rays, eating packaged food knowingly, unknowingly, your breads, biscuits, if they are part, so they are continuously adding additives and preservatives in your diet, so that has to be restricted. When we talk about young adults, or not young adults, when we talk about adults, तो उनकी lifestyle में काफ़ी shift आ जाता है. where they were active in their college days, then when they are adults they start working, तो sedentary lifestyle हो जाती है. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बैठ के बिताते हैं. सो इन दैट केस जब वो बैठते हैं तो एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है. दे आर मोर इनटू सिटिंग, मूवमेंट नहीं होता है, सो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्लीप कम हो जाती है. सो ऑल दिस कैन लीड टू इनिशिएशन ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन. आपके शुगर लेवल्स हाई आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई आ जाता है, जो कि काफ़ी नॉर्मल है. इन दीज डेज वी सी यंग पीपल 25, 26, 30 के आसपास भी लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर्स बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लेस स्लीप. सो उसका हमें ध्यान रखना है कि जब हम एडल्टहुड में एंटर करते हैं, जब भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं, सो मेक श्योर दैट वर्क लाइफ बैलेंस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो खा रहे हैं दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम जंक कैटेगरी. सो जंक फूड ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर से खा रहे हैं तो ही जंक है. अगर हम कुछ घर पे बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे पैकेट फूड यूज़ हुए हैं, सो देन स्टिल इट इज़ अ जंक फूड. ओल्डर एडल्ट्स के लिए मेरे पास ये टिप है कि जैसे हम एज हमारी प्रोग्रेस होती है, सो मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, सो आपकी ईटिंग पैटर्न्स डेफिनेटली चेंज होने चाहिए. जो क्वालिटी ऑफ फूड आप आपके यंग एज में खा रहे थे वो आज के यंग जनरेशन को मत एडवाइस कीजिए, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत डिफरेंस है. आपके टाइम में यूजुअली लोग हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सारा काम फिजिकल एक्टिविटी से इनकॉपरेटेड होता था. लाइक जॉब पे जाते थे तो दे हैड टू वॉक एंड गो, और अच्छी से नींद लेते थे, स्ट्रेस लेवल्स इतना नहीं था, कंपटीशन इतना नहीं था, तो जो भी वो खाते थे वो अच्छे से मेटाबोलाइज होता था. लेकिन एट प्रेजेंट जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें सोच समझ के खाना है. जैसे यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स एडवाइस करते हैं कि विंटर है तो बहुत सारा घी खाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जो वो घी मेटाबोलाइज कर सके, देन डेफिनेटली यू कैन ईट. लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपके कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बैलेंस्ड मील खाना चाहिए विच कंप्राइजेज ऑफ हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट. सो मेक श्योर कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं कि आपके लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट बिकॉज आपको कहा गया है. सो मेक श्योर कि कुछ टिप्स मैं दे रही हूँ जो आप फॉलो करोगे. सो फर्स्ट वन इज़ ईट होम कुक फूड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हम जंक फूड से इतना सराउंडेड है कि अगर हम होम कुक फूड खाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं अच्छा तू डाइट पे है क्या. नो, बट दैट इज़ आवर एक्चुअल डाइट. एंड हम जंक फूड जो खाते हैं वो ओकेजनल होना चाहिए, ना कि होम कुक फूड ओकेजनल होना चाहिए. सो मेक इट अ पॉइंट ऑन दिस फर्स्ट ईयर ऑफ द 2024 कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिक टू होम कुक्ड फ्रेश फूड. That will help you to stay away from any kind of metabolic diseases. If you follow that, have good sleep, 6 to 8 hours of sleep, don't compromise on your sleep, and try to manage your stress. Work life balance होना बहुत ज़रूरी है, because आज की hectic lifestyle में वो थोड़ा सा difficult है. So focus on that.
इंक्लूड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आज की लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है, इतनी मतलब पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2 hours इन अ डे वन साइड, एंड सो नो 3 to 4 hours गोज इन ट्रैवलिंग. सो उनको वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. बट सम हाउ इवन इफ यू कैन गेट 20 to 30 minutes ऑफ गोइंग ऑन अ ब्रिस्क वॉक और साइकिलिंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ stretches and yoga workout at home, nothing like it, that is definitely going to help. So ये चीज़ अगर आप 3 months के लिए follow करेंगे, I am sure you will see drastic difference in your lifestyle. And any queries related to your health issues or lifestyle, you can always DM me for any of the small tip where I feel I can be help. I would be glad to help you. So don't hesitate, DM me if you have any kind of issues. And thank you so much for being with me on my first live session. I am sure I will be trying more of live sessions so I can interact with you guys. So bye for today. Next time maybe I'll talk about some specific health related issues which can educate you guys, and we would have a good question answer session. If you have your queries, you can always put in the comments so that we can interact. Bye.